हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल सोशियो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बीए 5th सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। नेम ऑफ द पेपर इज़ कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम यूके एंड यूएसए। स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिसंबर 2024 में जो आपके एग्ज़ाम होने हैं उसके लिए है। ये इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी। जिस तरह से आपका पेपर आना है उसी तरह से इनको प्रिपेयर किया गया है। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिसमें 15 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। 9 का आपने आंसर देना होगा, 2 मार्क्स ईच होगा। इस तरह 18 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन हर एक यूनिट में से 2 पूछे जाएंगे और उसमें से 1 का आपने आंसर देना होगा। इस तरह 4 यूनिट आपके सिलेबस में है और 4 यूनिट्स में ही 4 क्वेश्चन आपको करने होंगे। इसी तरह से आप बाकी सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेबस के वीडियो यहीं इसी चैनल पे देख सकते हो। और कुछ के आपको पंजाबी मीडियम में ये वीडियो भी मिल जाएंगे, इसको अपडेट किया जा रहा है। सबसे पहले है शॉर्ट क्वेश्चंस। गिव एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। एंड नेक्स्ट है राइट डाउन 2 डेफिनेशंस ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। नेक्स्ट, define comparative politics. What do you mean by comparative method? And what do you mean by interdisciplinary study? And next, what do you mean by His or Her Majesty in Great Britain? And then what is senatorial courtesy? And next, what do you mean by value free study? And then write down the limitations of the comparative method. And then write down any 2 prerequisites to comparative method. And then write down the important conventions related to speaker in England. And next, what are the differences between common law and conventions in England? And then write down the main provisions of the Petition of Rights 1628. And then what do you mean by shadow cabinet? And next, write down the composition of House of Lords. And then why are conventions obeyed in England? स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना, इसी में से आपका पेपर आना है और इनके आप नोट्स प्रिपेयर करके उनको अच्छे से तैयार कर लेना। एंड नेक्स्ट है राइट डाउन 2 कन्वेंशंस रिलेटेड टू स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स। एंड देन राइट डाउन द टाइप्स ऑफ कमिटीज इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। एंड नेक्स्ट, राइट द कॉम्पोजिशन ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। एंड देन राइट डाउन एनी 4 वीकनेसेस ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स। And then what do you mean by rule of law? And then what is meant by suspensory veto? And then what do you mean by pocket veto? And then what do you mean by log rolling? And then write down 4 functions of pressure groups in Great Britain. And then write down the methods adopted by interest groups. And next, what is the significance of Magna Carta? And then give any 2 sources of British Constitution. And next, write down any 3 functions of pressure groups in UK. And next, write down any 4 characteristics of parliamentary system in England. And then write down the royal privileges. And next, what do you understand by His or Her Majesty opposition in England? And then what is jury system in Great Britain? And then write down the functions of the Vice President of USA. And next, write down any 4 rights of the American citizens. And next, write down any 2 rights included in the American Constitution. And next, write down any 2 salient features of the Constitution of USA. Write down any 2 salient features of US Constitution. इनके आंसर सेम है, क्वेश्चन मोल्ड करके डाला गया। इसी तरह से आपके पेपर में भी क्वेश्चन मोल्ड करके डाले जाएंगे, आंसर उनका चाहे सेम होगा। जो जैसे इसमें से दिए गए हैं उसी में से आपके क्वेश्चंस आएंगे, उसको मोल्ड करके पेपर में डाला जा सकता है। एंड देन राइट डाउन एनी 3 चेक्स ओवर द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। एंड नेक्स्ट, राइट डाउन कॉम्पोजिशन ऑफ अमेरिकन सेनेट। एंड देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। एंड देन राइट डाउन द स्कोप ऑफ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। एंड नेक्स्ट, राइट डाउन ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। And next, what is the utility of judicial review? And next, write down characteristics of American House of Congress. And next, write down the characteristics of the British party system. And then write down any 4 characteristics of political parties in England. And next, explain the method of electing the members of the Senate. And next, write down 4 features of American federal system.
And next, when was the present Constitution of USA implemented? And next, write down the composition of House of Lords. And next, give any two sources of British Constitution. And then, why British Constitution known as an evolved constitution? And then write down any two features of British Constitution. And next, write down the main characteristics of unitary government in Britain. And then write down four differences between king and crown. And then write down any four functions of the Speaker of the House of Commons. And next, write down any two differences between Cabinet and Council of Ministers. And next, what are assize courts in England? And then, what is the utility of the principle of checks and balances in the American Constitution? And next, what is the utility of the principle of checks and balance? And then, mention the merits of checks and balances the American political system. And next, what do you mean by pocket veto? And then, what is meant by filibustering? And then, write down original jurisdiction of American Supreme Court. And next, write down any four functions of pressure groups in UK. And then, write down any four features of party system in America. And then, what do you mean by lobbying? And next, what is the tenure of American president? And next, write four features of British party system. And next, write the methods adopted by the interest groups in America. And next, what is meant by pork barrel? And next, write down characteristics of comparative method. And next, who is the present Prime Minister of Britain? And next, once a speaker is always a speaker, explain. And next question, what are federal features of US Constitution? And then write down qualifications for the office of US President. And then describe four characteristics of American judicial system. And next, write down names of two main political parties in USA and UK each. स्टूडेंट्स, ये थे शॉर्ट क्वेश्चंस. इसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चंस. इनको यूनिट वाइज ही प्रिपेयर किया गया है. हर एक यूनिट में से दो लॉन्ग क्वेश्चन आपको आने हैं, जिसमें से एक का आपने आंसर देना है. यहाँ ये क्वेश्चन बनाए गए हैं, कई क्वेश्चंस के आंसर सेम है, उसको मोल्ड करके यहाँ बनाया गया है. ऐसे ही आपके पेपर में ये क्वेश्चंस आने हैं. सबसे पहले है डिस्कस द मीनिंग, स्कोप एंड यूटिलिटी ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स. एंड देन मीनिंग एंड स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. एंड देन डिफाइन कंपैरेटिव मेथड एंड एक्सप्लेन इट्स स्कोप एंड यूटिलिटी. इन क्वेश्चंस के आंसर तकरीबन सेम है, लेकिन इसको मोल्ड करके यहाँ अलग अलग बनाया गया है. एंड नेक्स्ट है डिफाइन कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स. डिस्कस द स्कोप एंड यूटिलिटी ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स. एंड देन डिस्कस द स्कोप एंड यूटिलिटी ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स. ऑल्सो डिस्कस इट्स लिमिटेशंस. एंड देन डिफाइन कंपैरेटिव मेथड. Explain its importance and limitations. And next, discuss the operational aspect of comparative method. And next, what do you mean by comparative method? Discuss its main characteristics. And next, define comparative government and politics. Distinguish between comparative government and politics. ये यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चन थे. अब है यूनिट सेकंड के, जिसमें है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज द चाइल्ड ऑफ एक्सीडेंट एंड डिज़ाइन. एक्सप्लेन. एंड नेक्स्ट, discuss the salient features of British political system. And then discuss the mutual relations between House of Lords and House of Commons in UK. And then rule of law is a distinctive characteristics of the constitution in England. Discuss. And then write down the organization and functions of the court in England with the special reference to the British Supreme Court. And then what do you understand by sovereignty of British Parliament? Discuss its limitations also. And then discuss the salient features of parliamentary government in England. And then discuss the features of British judicial system. And then discuss the salient features of the British Constitution. And then critically examine the concept of rule of law as practiced in Great Britain. And then British Constitution is convention ridden. Explain this statement. And then discuss the method of appointment, powers and role of British Prime Minister. And then in Great Britain there is dictatorship of the cabinet. Critically evaluate this statement. Unit third, discuss in detail the salient features of American Constitution. And then Senate is the only second chamber in the world whose powers are more than those of the popular lower house. Discuss the statement. And then make a critical evaluation of the election method of the President of USA. And then American Senate is the most powerful second chamber in the world. Discuss this statement.
And then the process of presidential election in USA is indirect in theory but direct in practice. Discuss. And then discuss the powers and position of US president. And next discuss the role of Supreme Court in American political system. And then discuss the composition and powers of US Supreme Court. And then examine the role of pressure groups in the British political system. And then critically examine the characteristics and role of the political parties in the American political system. And then critically examine the American federal system. And next, what do you mean by judicial review? Critically examine the power of judicial review of the American Supreme Court. And next, analyze the pressure group in British political system. And then write down the election procedure of American president. अब है यूनिट 4th. Explain the programs of British Conservative Party and discuss its role in British political system. And then discuss the organization and role of major political parties political system of UK. And then analyze pressure groups in American political system. And then discuss the characteristics and role of the political parties in the American political system. And next, discuss the role of the pressure groups in the British political system. And then discuss the role of the pressure interest groups in the American political system. And next, analyze pressure groups in American political system. And next, define His Her Majesty's opposition. Write down its functions and characteristics. And then write down the salient features and role of British party system. And then write a brief note on the interest pressure groups in America. Critically examine judicial review power of US judiciary. Explain unitary features of UK political system. स्टूडेंट्स, ये थे लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पेपर के लिए. इनको अच्छे से तैयार कर लेना. और कोई कुछ पूछना चाहते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो. बाकी सब्जेक्ट्स के जल्दी ही आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अपडेट कर दिए जाएंगे. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच. मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में.